वेल डावोस में यहाँ सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा थीम है दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड एट द ग्लोबल लेवल और इंडिया का सस्टेनेबिलिटी पर बहुत फोकस है. वन ऑफ द बिग टेक कंपनीज जिनका सस्टेनेबिलिटी पर बहुत सारा काम हुआ है और कैसे देखते हैं सस्टेनेबिलिटी एज अ बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड. मेरे साथ इस वक्त HCLTech के ग्लोबल हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी संतोष जयराम जुड़ रहे हैं. थैंक यू सर, लवली टू हैव यू हियर. सर, एज वी नो कि सस्टेनेबिलिटी की बात सब कोई कर रहे हैं एंड आई थिंक दैट्स द फ्यूचर, दैट्स द वे वी नीड टू नाउ पुट आवर एनर्जीज, आवर थॉट्स बिहाइंड. कैसे आप पहले तो डिफाइन कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी की इम्पोर्टेंस एंड वेयर शुड इंडिया टेक अ लीड हियर? Okay, so in terms of the sustainability in Davos, it has been one of the एक बड़ी सी topic है in the sense most of the discussions are touching upon that. So from an Indian IT tech services perspective, मैं ये देखूं कि ये जो the digital technology is going to be one of the biggest driver for sustainability. Sure. That the future of the sustainable world is going to have a lot of digital technologies to help them guide that path towards whether it is renewable energy, whether it is waste reduction. So tech will aid it, sir. Tech will literally aid the whole of that pathway towards a sustainable world. Correct. And in that, we as IT tech services companies from India have a big role to play. And that's where from HCLTech also we are poised to, or we have already invested into a lot of solutions. Sure. And many of our solutions are coming out very soon. Okay, so for instance, मैं यही जानना चाहती हूँ कि किस तरीके का काम HCLTech ने इसमें किया है और आप आगे क्या फोकस करेंगे. इन्वेस्टमेंट्स आपने बताई, but can you guys elaborate that for us? Yes. So our clients mainly look into दो तीन एरिया है जिसमें हम लोग ये कर सकते हैं. वन इज एज यू नो इन यहाँ पर डावोस में सस्टेनेबल फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे बात हुआ है ना. सो आप जब एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट में कितना एमिशंस हो रहा है, हाउ डू यू काइंड ऑफ नो. एंड इफ़ यू आर ए ग्लोबल बैंक, लुक एट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. ये सब ट्रैक करना मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज़ वेयर द टूलिंग इज़ रिक्वायर्ड. So that's one of the dimensions where we are looking into. अभी ये है रिपोर्टिंग. Almost every regulator, पूरे दुनिया में सभी रेगुलेटर्स, EU में तो regulations आ गया, the CSRD regulations, US में regulations आ गया. They are asking companies to report. और अभी इंडिया में भी BRSR is already there. So if you think about a company, एक 40-50 कंट्री में अगर है, वहाँ सबसे डेटा आएगा and almost about 100-200 matrices which they have to report. इसका accuracy, reliability कैसे होगा without a digital system? So I think that is another dimension where people will have to kind of bring in technology to kind of get all those things. And of course climate change. Every company has put forward their thing around net zero. And net zero कैसे होगा? I mean, how do you kind of look into your emissions, track your emissions, उसको कैसे improve करेंगे? So all these areas are the areas where we are looking into. Plus one unique area also where we are also looking into is product sustainability. आप जब phone खरीदते हो, and that phone, how sustainable it can be. So what are the substitutions which are possible, or even sustainable packaging. So these are dimensions where technology can play a big role, because for example, if you are able to create a digital twin of that and bring in the substitutes, test that it can meet the requirements, तो ये जो R&D है, it can be much more faster. And so these are the areas where we are working on. Absolutely. So ये बहुत interesting है, solutions देना sustainability के platform पर. इस वक्त कितने clients हैं सर, और कैसे आप इसको expand करेंगे इस area को? How is this business looking like? No, the business is promising, and almost every client whom हम लोग जिससे बात किया है, सभी लोग बोला है कि yes, they would be interested to take this forward. क्योंकि ज़्यादा इसमें काम हुआ नहीं है, and so there is a market out there, and we definitely are looking forward to engage with the clients. We are working with the clients, but I don't have the privilege to tell you about the names. Okay. Yeah. Okay, so there's a lot of work going on. Yes. That's nice to know. Thank you so much, sir. Lovely to speak to you. Thank you. Thank you.